Hello everyone, today we are going to see Java iterator question in the HackerRank. So यहाँ पे क्या दिया है Java iterator class can help you to iterate through every element in the collection. So यहाँ पे iterator method का यूज क्या होता है कलेक्शन में से एलिमेंट इटरेट करने के लिए होता है. लेट्स टेक एग्जांपल a list we have to iterate here and one by one all the elements are will be printed. Let's In this problem you need to complete the method function. The method takes the array list input. In that array list, there is one or more integers. Then there is special string hash hash hash. After that, there are one or more other strings. A sample array list may look like 42, 10, hash hash hash, hello and Java. You have to modify a function by editing at the most two lines code prints. So string yes yes. So यहाँ पे हमें क्या करना है hash 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 जैसे ऑकर होता है उसके बाद हमें हैश के बाद के जितने भी एलिमेंट है वो ही खाली प्रिंट करनी है. यहाँ पे एग्जांपल हैश के बाद यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है hello and java. So here we have given hello and java. So let's see what is given in code already and what we have to do. So public main method में क्या दिया है array list, उसके बाद yarn and yam, उसके बाद my list array list में integer store के, उसके बाद hash 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 string के store के, उसके बाद string hello and java यहाँ पे store होंगे. उसके बाद iterator it फंक्शन को कॉल करेगा. यहाँ पे अरे लिस्ट पास की जा चुकी है. इटरेटर यहाँ पे इटरेटर है. उसके बाद ऑब्जेक्ट एलिमेंट कंप्लीट दिस लाइन. व्हाट विल बी द लाइन हियर. वन एक ही ऑप्शन है यहाँ पे it डॉट नेक्स्ट होगा. उसके बाद हिंट क्या दिए यूज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर. सो यहाँ पे हमें हैश 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 के बाद ब्रेक करना है. सो व्हाट वी विल डू एलिमेंट if element is instance of string then we will break because hash 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 is a string. Then first of all iterator will check in array list first element is 42. So here element is 42 and 42 is the instance of string. No, it is not. Then next will be 10. So here if condition will check is 10 is the instance of string. No. So next element of the array list will be hash hash hash. So here we will check in if condition hash hash is the instance of string. Yes, it is true. Then this if condition will be break and this if condition will be break and here we go iterator it. Then it will contain can here we it dot hash next. Then it will be point to the next to the hash hash hash. That is what iterator will point to the this hello. Then here we will go in this main method iterator. The object element will be hello and hello will be printed. So first output will be printed. Then next it dot has next. Yes. और एक एलिमेंट iterator में array list में present है. So object element will be java. So यहाँ पे java print होगा hello and java. Hello and java will be printed. Now iterator will check is iterator has the next element. No, because the array list is now empty because the last element is java. So it will terminate from while loop and terminate the program. So in this way hello and java will be printed. So what we have to do is we have to just check is element is instance of string. If element is instance of string then we have to break and remaining code is given in here main method. So now we will run the code. टेस्ट के 0 पास हो चुका है. सबमिट द कोड. 0 1 and 2 पास हो चुके हैं. So in this way we can deal with this question.